exception to this rule. So it would be idle to contend that merely because a taxing statute purports to operate retrospectively, the retrospective operation per se involves contravention of the fundamental rights of citizen under Article 19(1)(f) or G. So there have to be other considerations which have to be brought before the court to hold that a retrospective amendment was illegal. Merely because it is creating a liability from a retrospective date would not be sufficient enough to hold that the amendment was illegal. I would be skipping some decisions because looking at the timeline. In this case of RC Tobacco Private Limited versus another versus Union of India, one interesting observation was made by Honorable Apex Court with regard to retrospective amendment when what they said that the law cannot be held to be unreasonable merely because it operates retrospectively. Indeed, even judicial decisions are in sense retrospective. When a statute is interpreted by a court, the interpretation is by fiction of law deemed to be a part of the statute from the date of its enactment. The unreasonability must lie in some other additional factor. So, agar supposedly if Supreme Court is analyzing a provision which is there in the statute from say 1960, the decision given in 2023 would be operative from 1960. So, in a sense, the decision which has been given as of today would be applicable right from 1960, unless until the court specifically says that it would be having a prospective effect. So, in this decision set, when our decision is also applicable from a prospective date, although it is analyzing a certain provision. So, merely because something is applicable from a retrospective date, that would not be sufficient itself to hold a provision illegal. The next principle, that a law is always prospective unless it is made retrospective by a express or a necessary implication. तो जो हम रेगुलरली बोलते भी हैं कि एक लॉ अगर आया है, unless the intent of the legislature is that it should be retrospective, it would always construct it to be prospective. तो यहाँ पे यही चीज को ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने व्हाट दिया, a new law ought to regulate what is to follow, not the past. This is a default understanding for application of a new law. Every statute is prima facie prospective unless it is expressly or by necessary implication made to have retrospective operations. तो यहां तक हमने दो चीजें that we have discussed up till now. That for a law to be retrospective, there has to be a specific mention that it is operated from a prior date. Secondly, only because a law is implemented from a prior date, that would not be sufficient enough to hold the law illegal. The third part, whenever a court would be looking at a retrospective law, it would be considering many factors, including the autonomy given to the state to manage the finances of the state and refunding a large amount to the taxpayers in case a law is held to be constitutionally invalid would also be taken into consideration by the courts as have been held by Honorable Apex Court. So these are the broad 3 to 4 conclusions which we have discussed up till now. Now looking at some of the instances of implementation of law in GST which are having a retrospective implication or a prospective implication, as we say. The first is section 16(2)(a). Now this is having a prospective impact. It is not having a retrospective impact because legislature inserted it from a date of 1st of January 2022. Section 7(1)(a). See, I am only highlighting the instances, not giving on to the how these provisions would be interpreted. Once we are done with the session, then we can have a discussion sometime later on the impact of these decisions and whether whether in our opinion they are within the powers of the legislature to make them retrospective or they are outside the power of the legislature to make it retrospective, that thereby holding it ultra vires. Second is section 7(1)(a). A supply of goods or services by a society to its members or vice versa.
which has been brought with a retrospective impact. The question is whether it creates a fresh liability, and if at all it creates a fresh liability, whether it is ultra vires or intra vires. The third, section 7(1)(d), which has been omitted with a retrospective effect for activities to be treated as supply of goods or services as referred to in Schedule 2. Rule 89(5). Now, this is one interesting case wherein by an amendment to the rules data through notification number 14/2022, the formula to claim refund in case of inverted duty structure was amended by way of a decision of Honorable Apex Court. And there is a follow-up circular also in this case, wherein they have said that only applications which have been filed amendment would be having the benefit of the new circular, and whatever application which have been filed prior to this date would not be having the benefit of the new formula. Next is section 54(2), wherein in case of the refund to be claimed in case of an inverted duty structure. Previously, the timeline was 2 years from the end of the financial year to which the refund claim relates. Now with effect from 1st of February 2019 by way of CGST Amendment Act 2018, they amended the relevant date to provide that it would be 2 years from the due date of filing of return under section 39. Now, what would be happening? Whether the applications which have been filed for a period, say the law was amended from 1st of February 2019, तो अब अगर मैंने जनवरी 19 के लिए मान लीजिए 1 जनवरी 19 से 31 जनवरी 19 के लिए मैंने कोई रिफंड एप्लीकेशन लगाई, whether it would be having a benefit of a timeline as per the provision which were prevalent as on 31st January 2019, or whether the provisions applicable as on the date of filing of the application. Say I am filing the refund application on 15th of March 2019. Whether the limitation period would be calculated as per the new provisions. Now again, in case of 171(3)(a), this provision was amended to provide a penalty in case of an anti-profiteering offence, if any, found against a registered person. Now this was prospective in effect. From 1st of January 2020, this provision was amended, and it said that the person who is found guilty of anti-profiteering shall be liable to pay penalty equivalent to 10% of the amount so profiteered. Now the question comes कि अगर मान लीजिए मेरे अगेंस्ट में ऑफेंस पाया जाता है of anti-profiteering for a period of 1st of July 2017 to 31st of March 2018, और वो प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट होती हैं फरवरी 2021 में. So the offense is for period prior to the amendment, but the proceedings have been initiated after the amendment. How the proceedings would be concluded as per the previous provisions which were there during 17-18, because this provision of penalty was not there at that time, or as per the new provisions when the proceedings were initiated, because at that time the penal provisions were in the statute. The definition of adjudicating authority. In this definition of adjudicating authority, which was amended from 1st of February 2019, initially the NAA was part of the adjudicating authority. But from 1st of February 2019, NAA has been excluded from the purview of adjudicating authority, because an order passed by adjudicating authority is liable, can be appealed before the Commission Appeals. Now, since from 1st of February 2019, this definition of adjudicating authority excludes the authority under section 171(2). What happens to cases which have been made for a period before 1st of February 2019? Secondly,
what would be the fate of the cases which have been made after 1st of February 2019 but for a period prior to 1st of February 2019. देखिए, अगर हम प्रोविजंस को देखेंगे तो दे आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिव. The legislature has only made retrospective effect to certain provisions only, like section 71AA, 71D. They have been brought in with a retrospective effect. पर अगर हम रिफंड का फॉर्मूला देखेंगे 89(5) में, अगर हम सेक्शन 171(3)A देखेंगे जहां पे पेनल्टी इंपोज करी गई है, अगर हम रूल 89(5) का रिफंड फॉर्मूला या 171(3)A या डेफिनेशन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देखेंगे या टाइमलाइन अंडर सेक्शन 54 देखेंगे, so they are all prospective. They are all prospective. But what happens to the cases which have been initiated after the insertion of those provisions for a period prior to the insertion of these provisions? अब उसके बाद एक सर्कुलर भी आया था, सेक्शन सर्कुलर नंबर 164, जहां पे उन्होंने रॉयल्टी के क्लासिफिकेशन को डिसाइड किया था और उसमें बोला था कि although 9973 does not contains a specific provision for levy of tax at the rate of 18% on royalty, पर क्योंकि हमारा इंटेंशन 18% का था और हम सर्विस टैक्स में 15% की रेट लगाते थे, तो कोई कारण ही नहीं था कि हम जीएसटी में उससे कम लगाते. So for the period 1st of July 2017 to 31st of December 2018, हम ये बोलते हैं कि रॉयल्टी जो है वो रेजिडुअल कैटेगरी में जाकर के 9997 में 18% से टैक्स रेट लगेगा. Now this was a circular which clarified a thing, going against many of the decisions given by AAR and RRR and contrary to the understanding of the department as well as of the assessee. So what happens to the tax which has been paid by the assessees, treating that the tax rate was leviable at the same rate of the goods during the period 1st of July 2017 to 31st of December 2018? Or can the circular retrospectively classify a thing which is not specifically there in the rate notification, but as per the understanding which they had in their own minds and which they never reflected at any point of time? So these are 7 instances which I have tried to highlight. There are many more instances other than this, but specifically speaking, and more or less principally, this discussion today would be covering at some point of time these all these instances, though not specifically referring to those instances, but in the cases which we will be discussing. Now the question is, what is a prospective law? What is a retrospective law? And third and the most interesting part, what is a retroactive law? जब हम बात करते हैं तो हम दो तरह के लॉज को रेगुलरली रेफर करते हैं, एक प्रोस्पेक्टिव लॉ, एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, बट रेयरली वी डिस्कस व्हाट इज अ रेट्रोएक्टिव लॉ. पर जब मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था, ये प्रेजेंटेशन हालांकि पहले तैयार कर रहा हूं, इट इज नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन वन डे, पर जो रेट्रोएक्ट जब मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था तब मेरे को इस कंसेप्ट का पता चला कि रेट्रो देयर इज अ कंसेप्ट आल्सो कॉल्ड रेट्रोएक्टिव लॉ. तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ दीस थ्री लॉज? तो एक ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का डिसीजन है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जहां पे इन्होंने तीनों स्टैट्यूट्स को डिस्कस किया था. तो पहला तो उन्होंने बोला व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट? द प्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट ऑपरेट्स फ्रॉम अ डेट ऑफ इट्स इनैक्टमेंट कंफरिंग न्यू राइट्स. तो हमने बात ही करी कि अनलेस अनटिल एक डिफॉल्ट एक जो अंडरस्टैंडिंग है कि एवरी लॉ विल ऑपरेट इन अ प्रोस्पेक्टिव पीरियड अनलेस अनटिल इट स्पेसिफिकली states it to be operative from a prior date. तो पहला चीज प्रोस्पेक्टिव लॉ में क्लियर है. The second is retrospective law, which operates backward and takes away and impairs vested right acquired under the existing laws. तो यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट एक प्रायर पीरियड से में जाकर के और प्रायर पीरियड की डेट से मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट करता है या मेरे राइट जो है लेता है. So that means there are two factors. First factor is it operates on a condition
which existed prior to the date of enactment. And secondly, it takes away or impairs the vested right which was earlier available, and it takes that right from the retrospective date. तो पुरानी डेट पे जाकर के पुराने फैक्टर्स पे बेस बना करके वो मेरा राइट जो है इट इज टेकन अवे, दैट इज अ रेट्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट। देखिए दो चीजों पे एम्फेसिस है रेट्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट में, कंडीशन भी पुरानी होगी और राइट भी बैक डेट से लिया जाएगा। जब ये दोनों चीजें पूरी होती है तब एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट बनता है। एक रेट्रोएक्टिव स्टैट्यूट क्या होता है? कंडीशन पुरानी होती है पर राइट जो है वो आगे की डेट से लिया जाता है, या राइट जो है या लाइबिलिटी जो है वो आगे की डेट से क्रिएट करी जाती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मान लीजिए कि आज की तारीख में 19 अगस्त 2023 को एक लॉ आता है जो ये बोलता है कि कोई भी काउंसिल मेंबर, कोई भी जना जो एक बार काउंसिल मेंबर रह चुका है, he would not be entitled to fight the council elections in future. अब देखिए इसमें क्या चीज है, कंडीशन कहां की है? कंडीशन है पहले की कि कोई भी जना जो काउंसिल मेंबर रह चुका है कभी भी, मतलब आज अगर वो कोई चीज इनैक्ट हुई है तो वो कंडीशन क्या डाल रही है? पहले की। और डिसेबिलिटी कहां से क्रिएट कर रही है? फ्यूचर से। तो ऐसे एक्ट को रेट्रोएक्टिव लॉ कहा जाता है जहां पे कंडीशन पहले से ली जाती है पर इंपेयरमेंट है या नए राइट्स जो है वो फ्यूचर में दिए जाते हैं। जैसे ये जो डिसीजन था विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, ये हिंदू एक्ट पे, हिंदू सक्सेशन एक्ट पे था। एंड इफ यू रिमेंबर कि 2005 से डॉटर्स को भी को पार्सनल राइट दिया गया था, दैट दे आल्सो हैव अ राइट इन द प्रॉपर्टी। अब इस राइट को दिया कब से गया? 9 सितंबर 2005 से। पर इस राइट को अर्न कब किया गया? फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। वो डेट ऑफ बर्थ कब की थी? वो पहले की थी। तो कंडीशन पहले की थी, राइट फ्यूचर डेट से दिया गया, तो दैट इज कॉल्ड अ रेट्रोएक्टिव लॉ। जैसे अभी एक केस आया था राजस्थान वैट एमनेस्टी स्कीम में, वेयर इन वैट एमनेस्टी स्कीम ऑफ 2023 stated that if a person has applied in an amnesty scheme of 2022, he would not be eligible to claim benefit under amnesty scheme 2023. अब कंडीशन किसको बनाया गया? 2022 की एप्लीकेशन को। राइट कहां से लिया गया? 2023 के एमनेस्टी स्कीम में। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव एंड अ रेट्रोएक्टिव लॉ। These are all, this is one interesting case of Dilip versus respondent Mohammad Azizul Haq and another. Again, a Supreme Court judgment wherein they detailed out on a retroactive amendment, और फिर इसको हम GST में कैसे लिंक करेंगे, that we will discuss. Now, in this decision, what Honorable Apex Court said, that if the enactment comes into force during a period, operates on those events occurring thereafter. Therefore, the fact that as from a future date, tax is charged on a source of income which has been arranged or provided for before the date of imposition of the tax. That means my source of income was existing prior to the amendment, and a tax has been brought on the to levy tax on the future income. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इट डज नॉट मीन दैट अ टैक्स इज रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पोज्ड एंड हेल्ड इन कमिश्नर्स ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज वर्सेस थॉर्न इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस केस में क्या बोला कि इनकम का सोर्स मेरा पहले से था, तब वो इनकम टैक्सेबल नहीं थी। सब्सिक्वेंटली 2 साल बाद जब मैं वो इनकम अर्न कर रहा था तो एक नया टैक्स आ गया जिसने उस पे फ्यूचर की डेट पे टैक्स लगाया, फ्यूचर की इनकम पे टैक्स लगाया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जब मेरी सोर्स ऑफ इनकम मेरे को चालू हुई थी तब कोई टैक्स नहीं था, तो आप आगे की डेट से कैसे टैक्स लगा सकते हो? आपको तो जिस दिन मेरी सोर्स ऑफ इनकम आई थी उसी दिन मेरे को टैक्स चार्ज करना था,
पर अब आप आगे की डेट से टैक्स 2 साल बाद टैक्स ला रहे हो और बोल रहे हो कि अब से आप तुम जो भी इनकम अर्न करोगे उस पर हम टैक्स लगाएंगे, तो मैं ऐसा कंटेंट नहीं कर सकता। इसको हम कहां पे जीएसटी से लिंक कर सकते हैं? टू माय माइंड, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। 1 जुलाई 2017 से पहले वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मेरा कोई एग्रीमेंट हुआ 1 अप्रैल 2017 को, जिसमें मेरे को 1 साल तक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज देनी थी। इसका मतलब है मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्री जीएसटी रिजीम का है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया। नाउ व्हाट जीएसटी सेज कि आगे आप जो भी काम करोगे उस पे हम टैक्स लगाएंगे अंडर जीएसटी। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि जिस दिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस दिन जीएसटी नहीं था, तो अब आगे आप कैसे जीएसटी लगा सकते हो? Because tax GST is only being sought to levied from a future date. It is not levying tax on the receipts earned prior to 1st of July 2017. So your source of income might have come into existence prior to the statute, but if a statute is trying to levy tax on the future income, it is not retrospective. अब यहाँ पे रेट्रोएक्टिविटी को भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में जो सेबी वर्सेस राजकुमार नागपाल 2022 जजमेंट 30 अगस्त 2022, जहां पे उन्होंने ट्रू रेट्रोएक्टिविटी और क्वासी रेट्रोएक्टिविटी को डिस्कस किया। तो अभी तक तो हम सिर्फ प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव पे थे, उसके बाद हमने रेट्रोएक्टिविटी पे गए, और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको दो में डिवाइड कर दिया कि व्हाट इज अ ट्रू रेट्रोएक्टिविटी एंड व्हाट इज अ क्वासी रेट्रोएक्टिविटी। तो वहां पे उन्होंने बोला कि ट्रू रेट्रोएक्टिविटी वो है जो हम रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट को बोलते हैं। अगर हमें क्लियरली बात करें इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स ऑफ ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, इट सेड the first which may be called true retroactivity consists in the application of a new rule of law to an act or transaction which was completed before the rule was promulgated. तो जिसको हम retrospective amendment बोलते हैं, it is a case of true retroactivity. And the second concept, which will be referred to as quasi retroactivity, occurs when a new rule of law is applied to an act or a transaction in the process of completion. The foundation of these concepts is the distinction between completed and pending transactions. तो इस जजमेंट के बाद में मैं बात करूं तो मैं अब रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड नहीं बोलूंगा, मैं उसको ये बोलूंगा, वन इज अ प्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट, सेकंड इज अ ट्रूली रेट्रोएक्टिव स्टैट्यूट, एंड थर्ड इज अ क्वासी रेट्रोएक्टिव स्टैट्यूट, wherein the true retroactive statute is nothing but a retrospective statute, and a quasi retroactive statute is nothing but a rule of law which would be applied to future transactions, although the condition might be based on the past transactions. So this is a case of a, these are the three types of law. अभी तीन तो हमने समझ लिए कि प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव और या फिर ट्रूली रेट्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव और क्वासी रेट्रोएक्टिव क्या स्टैट्यूट है। Next thing to understand is what is the substantive law and what is the procedural law. Because unless until we are able to distinguish a law between a substantive law and a procedural law, we would never be able to understand the implication of an amendment, that whether it is a prospective amendment or a retrospective amendment, even though the amendment might not specify that it is a retrospective amendment. जैसे take an example, मान लीजिए जीएसटी 3B का फॉर्म जो है वो 20th of अगस्त 2023 को चेंज हो जाता है। बड़ा खतरनाक सा एग्जांपल दिया है। 20 अगस्त 2023 को गवर्नमेंट चेंजेस द फॉर्म ऑफ जीएसटी 3B, and the rule says that with effect from 20th of August 2023, 3B form is changed. On the face of the amendment हमको लगता है कि यार ये तो prospective amendment है, पर
21 अगस्त 2023 को अगर मैं 2022 का कोई रिटर्न फाइल करूंगा तो पुराने नए फॉर्म में होगा, पुराने फॉर्म में तो होगा नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि 20 अगस्त 23 से पहले के जो भी रिटर्न भरे जाएंगे वो पुराने फॉर्म में भरे जाएंगे और 20 अगस्त 2023 के बाद के पीरियड के रिटर्न ही नए फॉर्म में भरे जाएंगे। 20 अगस्त 2023 के बाद कोई भी रिटर्न भरा जाएगा वो नए फॉर्म में भरा जाएगा, चाहे वो किसी भी पीरियड का हो। तो on the face of it, the amendment is a prospective amendment, but the impact is retrospective. तो अब इस चीज को डिस्कस करने से पहले पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द सब्सटैंटिव लॉ एंड व्हाट इज द प्रोसीजर लॉ। And once we are able to distinguish between a substantive law and a procedural law, then we would be able to better comprehend that if even if the law is not specifically stating it amendment to be retrospective, still it would be a retrospective amendment. So Thirumalai Chemicals Limited versus Union of India. A substantive law refers to a body of rules that creates, defines, and regulates rights and liabilities. So a law which is creating, defining, and regulating my right and liabilities, that is a substantive law. Section 54 में कोई अमेंडमेंट होता है जो मेरी एलिजिबिलिटी ऑफ रिफंड को चेंज करता है, दैट इज अ सब्सटैंटिव लॉ. A procedural law establishes a mechanism for determining those rights and liabilities and a machinery for enforcing them. उस राइट को एनफोर्स करने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाता है, कोई फॉर्म नोटिफाई किया जाता है, कोई मशीनरी लाई जाती है, दैट इज अ प्रोसीजर लॉ. तो मेरा राइट, मेरी लाइबिलिटी को जो चीज डिफाइन करती है वो सब्सटैंटिव लॉ है. उस राइट या लाइबिलिटी को एनफोर्स करने के लिए कोई मैकेनिज्म माना जाता है, कोई फॉर्म लाया जाता है, कोई प्रोसीजर लाया जाता है, दैट इज अ प्रोसीजर लॉ. तो इंपैक्ट ऑफ बीइंग अ सब्सटैंटिव और अ प्रोसीजर लॉ. तो चलिए समझ में आ गया. मैंने देखा कि यार ये तो लॉ मेरे राइट को इंपैक्ट कर रहा है और ये लॉ एक प्रोसीजर को इंपैक्ट कर रहा है. उससे फर्क क्या पड़ा? व्हाट इज द impact of being a substantive or procedural law? Again, Thirumalai Chemicals Limited versus Union of India. Every litigant has a vested right in the substantive law, but no such right exists in a procedural law. मेरे सब्सटैंटिव लॉ में मेरा वेस्टेड राइट है, आप उसको इंपैक्ट नहीं कर सकते, और इंपैक्ट करते हो तो यू हैव टू satisfy the conditions laid down by Honorable Apex Court of being not being violative of Article 14, 19, 21 and other articles of the Constitution. वहां पे मेरा वेस्टेड राइट है, आई हैव अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट. पर मैं प्रोसीजर लॉ में नहीं बोल सकता हूं कि प्रोसीजर में मेरा इंटरेस्ट है एंड यू कैन नॉट अमेंड द प्रोसीजर. जिस दिन मेरे को वो राइट मिला था उस दिन जो प्रोसीजर था आपका प्रोसीजर वही होगा, दैट आई कैन नॉट से. मेरे को 19 अगस्त 2023 को मैंने कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया, उस दिन मेरा वो राइट एक्रू हो गया. Now that right can be taken away from me only in rarest of rare circumstances. बट मेरे को राइट अक्रू हुआ 19 अगस्त 2023 को, उस दिन कोई प्रोसीजर बताया हुआ था. सब्सिक्वेंटली वो प्रोसीजर मान लीजिए 10 दिन बाद चेंज हो जाता है. अब मेरे को प्रोसीजर फॉलो करके मेरे राइट को क्लेम करना है, तो मैं ये जाकर के नहीं बोल सकता कि 19 अगस्त को जो प्रोसीजर था मैं उसी को फॉलो करूंगा, बिकॉज आई डू नॉट हैव अ वेस्टेड राइट इन द प्रोसीजर, आई ओनली हैव अ वेस्टेड राइट इन द लॉ. अनंत गोपाल शरय वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो पर्सन हैज अ वेस्टेड राइट इन एनी कोर्स ऑफ प्रोसीजर. He has only the right of prosecution or defense in the manner prescribed for the time being by or for the court in which the case is pending, and if by act of parliament the mode of procedure is altered, he has no other right than to proceed according to the altered mode. And time I'm skipping
certain slides क्योंकि yes, Sikaram and Sons Limited versus the Commission of Sales Tax. Alteration in the form of procedure are always retrospective unless there is some good reason for why they should not be retrospective. तो प्रोसीजर अगर चेंज होगा तो इट वुड ऑलवेज बी रेट्रोस्पेक्टिव. तो जैसे हमने एग्जांपल लिया कि मेरे को 3B अगर 20 अगस्त 2023 के बाद अगर 20 अगस्त 2023 को 3B का फॉर्म चेंज होता है और मैं 21 अगस्त 2023 को अगर रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो इट वुड बी इन द न्यू फॉर्म, इट वुड नॉट बी इन द ओल्ड फॉर्म. Because I do not have the right in the procedure, I only have the right in the substantive law. Arpit sir, Agi. I would request to elaborate it again. That what is the distinguish between procedural law and substantive law, and how can we synchronize these three concepts: retrospective, retroactive, and prospective with this substantive and procedural? Yes. We will take it once the presentation is completed. क्योंकि Sure. कहीं ना कहीं जो आपका जो क्वेरी आपने रेज करी है, it would be discussed in the subsequent slides. क्योंकि Okay. because now at present we are only discussing the broad principles of what is the prospective, retrospective, retroactive law, and then what is the procedure or substantive law, and whether I have vested right in the substantive law or a procedure law as well. तो ये एक बार आप है ना प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव को फिर से ब्रीफ कर सकते हैं? देखिए, आज मान लीजिए CGST एक्ट है एंड इट सेज कि सेक्शन 16(2) की 4 कंडीशंस जो है अगर आप पूरी कर लेंगे तो यू वुड बी एंटाइटल्ड टू द ITC. So the once I fulfill all these 4 conditions, this is my substantive right. Now, if the law wants to take away this right through a retrospective amendment, that can only be taken by a valid law, which is a law valid under Article 14, 19 and 21. पर मान लीजिए कि मेरा वो चारों कंडीशन मैंने पूरी करी और उन्होंने बोला कि भाई अब आपको क्लेम करने के लिए इसको 3B में डालना है और 3B का फॉर्म ने चेंज कर दिया. Now, how to claim the ITC is part of the procedure. Similarly, for refunds, Section 54 says that you are entitled to refund under an export claim or an inverted duty structure. अब मान लीजिए कल को वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो अभी की डेफिनेशन, अभी का स्कोप है कि योर टैक्स रेट ऑन इनवर्ट सप्लाई शुड बी मोर देन द आउटपुट सप्लाई. ये एक बेसिक कंडीशन है. इस केस में जाकर के वो बोल देते हैं कि योर टैक्स रेट ऑन inward supply should be more than the outward supplies by at least 50%. Now this is a amendment to a substantive procedure. क्योंकि जिस दिन मैंने वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया था उस दिन वो राइट मेरा क्रिएट हो गया था. अब आप रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के ये कंडीशन डाल देंगे कि 50% से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए इन केस ऑफ एवरेज इनवर्ट सप्लाई एंड एवरेज आउटवर्ड सप्लाई. तो वो चीज जो होगी दैट वुड बी इंपैक्टिंग माय राइट. पर मेरे को रिफंड का क्लेम कैसे फाइल करना है, रिफंड की एप्लीकेशन कैसे है, दैट इज अ प्रोसीजर राइट. टेक अनदर एग्जांपल, राइट टू अपील. राइट टू अपील इज अ सब्सटैंटिव राइट. पर जो लिमिटेशन पीरियड है, whether limitation period is a substantive right, limitation period is not a substantive right unless until that amendment to the limitation takes away a right. जैसे मान लीजिए कि मेरा आज कोई ऑर्डर पास हुआ और ऑर्डर पास होने के बाद नॉर्मल जो टाइम लिमिट है वो 90 डेज की टाइम लिमिट है. आई वॉज अंडर द बिलीव कि वो 90 डेज में मेरे को अपील फाइल करनी है. जब उस अपील के 65th डे हुआ था ऑर्डर, जब उस ऑर्डर होने के बाद में 65th डे हुआ था तो उस दिन जाकर के लॉ को अमेंड करके बोल दिया कि 60 दिन का पीरियड होगा.
तो दैट वुड बी अल्ट्रा वायस अमेंडमेंट। पर मान लीजिए वो ऑर्डर पास हुआ, उसको 5 दिन ही हुए हैं और उन्होंने रिड्यूस कर दिया 90 डेज की टाइम लिमिट को 30 डेज में। तो जिस दिन ऑर्डर पास हुआ था उस दिन 90 डेज की टाइम लिमिट थी और 5 दिन ही खत्म हुए हैं, उन्होंने रिड्यूस करके 30 दिन कर दिया अक्रॉस द स्टैट्यूट। तो अब क्योंकि लिमिटेशन जो है दैट इज अ प्रोसीजरल एस्पेक्ट, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ था तो उस दिन 90 दिन की टाइम लिमिट थी तो मेरे को 90 दिन ही मिलने चाहिए। मेरे को 30 दिन ही मिलेंगे और मेरे को 30 दिन के अंदर ही अपील फाइल करनी पड़ेगी। तो दिस इज अ ब्रॉड अ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ अ सब्सटैंटिव राइट और प्रोसीजरल राइट। अब ये डिसीजन है हितेंद्र विशु ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज अ वेरी गुड डिसीजन which distinguishes between a substantive right and a procedural right and how they are applicable. So what it says, a statute which affects substantive right is presumed to be prospective in operation unless made retrospective, either expressly or by necessary indentment, whereas a statute which merely affects the procedure, unless such a construction is textually impossible, is presumed to be retrospective in its application, should not be given an extended meaning. तो सब्सटेंटिव राइट लॉ में कोई अमेंडमेंट हुआ जहां पे मेरा राइट जिस दिन मेरे को एक्रू हुआ था उन्होंने उसको चेंज किया, तो इट वुड ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव अनलेस अंटिल इट इज स्पेसिफिकली मेड रेट्रोस्पेक्टिव। पर प्रोसीजरल अमेंडमेंट जो होगा इट वुड ऑलवेज बी रेट्रोस्पेक्टिव, which because it says that how the right is to be claimed, it gives the procedure to claim the right, it gives the form in which the right has to be claimed. Law relating to forum and limitation is procedural in nature, whereas the law relating to right of action and right of appeal, even though remedial, is substantive in nature. तो लिमिटेशन पीरियड अगर चेंज होता है इट इज प्रोसीजरल इन नेचर, पर राइट टू अपील दैट इज सब्सटैंटिव इन नेचर. Every litigant has a vested right in the substantive law, but no such right exists in the procedural law. So this was a broad discussion about the substantive and the procedural law and the impact of being a substantive and a procedural law. Now, other issues relating to substantive and procedural laws, this is relating to limitation, wherein in this case R.C. Jal versus Union of India, wherein the court said that the statute of limitation assumes the existence of a cause of action and does not define or create one. तो लिमिटेशन का जो स्टैट्यूट है, लॉ मेरे को राइट टू अपील देता है, दैट राइट टू अपील इज कमिंग फ्रॉम सेक्शन 107. The limitation of 90 days only provides me and assumes that there is a right to appeal. It does not define or create any right to appeal. तो दो अलग अलग चीजें हैं. राइट टू अपील एक सेपरेट है, पर क्योंकि उसमें 90 डेज दे रखा है इसलिए राइट टू अपील नहीं है. लॉ स्पेसिफिकली मेरे को राइट टू अपील देता है इसलिए वो मेरा सब्सटेंटिव राइट है, और लिमिटेशन जो है उसको उसको उसकी एग्जिस्टेंस को मानते हुए एक टाइम लिमिट देता है. दैट्स व्हाई लॉ ऑफ लिमिटेशन इज अ प्रोसीजरल लॉ. Again, in Thirumalai Chemicals, law of limitation is generally regarded as procedural, and its object is not to create any right, but to prescribe periods within which the legal proceedings be instituted for enforcement of right which exist under substantive law. देखिए लिमिटेशन का जो पीरियड है हम देख रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया वेयर इन दे सेड कि 120 डेज के बाद में अगर कोई भी अपील फाइल करता है जीएसटी में, that would be considered as time barred and not even the high courts have the right to extend that time limit. लिमिटेशन क्या है? बेसिकली दो पार्टीज होती हैं, मान लीजिए एक एसएससी है और एक डिपार्टमेंट है. डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर पास किया जिससे एसएससी के अगेंस्ट में एक लायबिलिटी क्रिएट हुई और डिपार्टमेंट को एक राइट मिला टू रिकवर दैट लायबिलिटी. बट दैट राइट टू रिकवर दैट लायबिलिटी इज इन अबेयंस फॉर द 90 days.
because the assessee has the option to file an appeal or 120 days. So the right of the department over the demand is in abeyance up till 120 days. But once that 120 days expire, the department gets a right. अब अगर वो राइट आने के बाद में कोर्ट जो है 120 दिन के बाद भी डिले को कंडोन कर देते हैं, so that means they are going beyond the statute and taking away the right which is vested with the department and giving it back to the taxpayer. तो जो लिमिटेशन जहां पे रेगुलरली क्वेश्चन होता है और जो बेसिस अभी चल रहा है वो ये जो बेसिक थीम है, व्हाई द कोर्ट्स आर नॉट very positive in extending the time limit beyond 120 days, because the department is saying that if you are extending the time limit beyond 120 days, you are taking away a right which has accrued to us, and that is going beyond the statute, because the statute specifically provide that the right would come to right would extinguish, the right to appeal would extinguish after 120 days as per the provisions of GST Act. In this case, they said that there is no doubt that the law of limitation is a procedural law and the provisions existing on the date of the suit apply to it. Penal statutes, whether substantive or procedural. Section 171(3)(a) 1 जनवरी 2020 को जीएसटी एक्ट में आया था, जहां पे उन्होंने बोला कि कोई भी जना अगर एंटी प्रॉफिटरिंग एक्टिविटी में आइडेंटिफाई किया जाता है and an order is passed against him, he would be liable to a penalty of 10% of the anti-profit amount. तो जो हमने डिस्कस किया था पीरियड 17-18 का है, पर जो ऑर्डर पास हुआ है ये मानते हुए कि उन्होंने एंटी प्रॉफिटरिंग के प्रोविजंस को वायलेट किया था, वो 2021 में हुआ है, और ये प्रोविजन 171(3)(a) का 1 जनवरी 2020 को आ गया। किस तरह से इसका इंपैक्ट होगा, whether it is a substantive amendment or a procedural amendment, क्योंकि सब्सटेंटिव अमेंडमेंट होगा तो सिर्फ ऑफेंसेस जो आगे कमिट करे जा रहे हैं उस पे होगा, प्रोसीजरल होगा तो कोई भी केस अगर 1 जनवरी 2020 के बाद क्रिएट किया गया, चाहे जो पहले के पीरियड का हो, तो भी वो नए प्रोविजंस के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस विष्णु रामचंद्र बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला, it manifestly shocks one's sense of justice that an act legal at the time of doing it should be made unlawful by some new enactment. तो 171(3) ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, तो जब प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है तो इसका मतलब है कि इसके पहले का जो पीरियड है और अगर उसमें एंटी प्रॉफिटरिंग में आइडेंटिफाई किया भी जाता है किसी को, so it was not a penal offense at that time, and once it was not a penal offense at that time, so even if a case is made against me after January 2020 when the new provision was in force, I cannot be made liable to pay the penalty. तो जब वो 1 जनवरी 2020 को पेनल्टी प्रोविजन आया है, तो 1 जनवरी 2020 के पीरियड के लिए अगर कोई एंटी प्रॉफिटरिंग का केस बनता है तभी वो पेनल्टी एप्लीकेबल होगी, उससे पहले वाले पीरियड के लिए वो पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। Now this is a case of Transmission Corporation of AP versus Chandra Prabhakar, wherein statute relating to penalty and offences were discussed, and various principles relating to levy of penalty and its implications were discussed, and then said a statute which punishes as a crime a previous act which was innocent when committed violates the constitutional guarantee. तो 1 जनवरी 2020 से अगर आप पहले मैंने कोई एक्ट किया जिसको आपने पीनल ऑफेंस 1 जनवरी 2020 से ही माना है, तो आप अगर पुराने एक्ट पे उससे लगाओगे तो वो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। Legislation which aggregates the degree of the crime resulting from an act committed prior to its passage violates a constitutional prohibition. Law which imposes additional punishment to that prescribed when a criminal act was committed is ex post facto. तो
अगर आप 1 जनवरी 2020 को कोई लॉ लाते हो और बोलते हो कि पहले वाले ऑफेंसेस भी हम कवर करेंगे, तो दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव, एंड वंस इट इज रेट्रोस्पेक्टिव that violates the constitutional guarantee, because when the act was committed it was not a crime. A law which alters the legal rules of evidence so as to require lesser proof than the law required at the time of commission of an offence in order to convict the accused can amount to an ex post facto law within the constitutional guarantee. तो अब ये जो डिसीजन है उसमें उन्होंने दो चीजों को क्लियर किया. पहली चीज, अगर कोई प्रोस्पेक्टिव लॉ है तो वो पीनल ऑफेंसेस जो होंगे प्रोस्पेक्टिवली ही इंप्लीमेंट करेगा. अगर वो रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हैं विद अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल फ्रॉम से 1st of July 2017 इन रिलेशन टू लेवी ऑफ पेनल्टी, तो कहीं ना कहीं इट वुड बी वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी बिकॉज व्हेन दैट एक्ट वाज कमिटेड इट वाज नॉट एन ऑफेंस. और जब वो प्रोस्पेक्टिव है लॉ, तब तो कोई बात ही नहीं होती कि पुरानी चीजों को आप, पुरानी चीजों के लिए आप मेरे पे पेनल्टी लेवी कर दो. Right to appeal, a substantive or procedural law that we have already discussed. Ki right to appeal is a substantive right, but the limitation provided to file an appeal is a procedural right. अब अमेंडमेंट्स जो होते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि वैलिडेटिंग अमेंडमेंट्स भी होते हैं. By way of validating amendments, we mean a corrective action or corrective statute which seeks to correct something which was not there, which has been incorrectly drafted in the statute. The intent was something else, पर जब एक्ट को ड्राफ्ट किया गया तब वो उस इंटेंट को प्रॉपर्ली वो उस स्टैट्यूट में ला नहीं पाए. तो पहली चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन टोबैको एसोसिएशन. If there is a vested right and that right is to be taken away, necessarily the law will have to be retrospective in effect. तो अगर मेरा राइट है और आपको उस राइट को पहले की डेट से लेना है तो आपको उसको रेट्रोस्पेक्टिव बनाना पड़ेगा. अगर नहीं है तो वो प्रोस्पेक्टिव माना जाएगा. अब ये वैलिडेटिंग स्टैट्यूट जो हमने बात करी, कैनन इंडिया के जजमेंट को जो रिवर्स करने के लिए हम बोले या फिर एक्ट में जो एनोमली थी उसको सही करने के लिए बोले, तो यहाँ पे लोहिया मशीन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला व्हेन पार्लियामेंट पासेस एन अमेंडमेंट validating any provision which might have been declared invalid for some defect or lacuna, parliament seeks to enforce its intention which was already there by removing the defect or lacuna. Parliament indeed seeks to create a result of the statutory provision being declared invalid. तो कैनन इंडिया के जजमेंट में उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि अ पर्टिकुलर ऑफिसर इज नॉट अ प्रॉपर ऑफिसर. उसके बाद एक वैलिडेटिंग स्टैट्यूट लाया गया फाइनेंस बिल 2022 में, और वहां पे क्या बोला गया कि वो जो डिफेक्ट और लैक्यूना कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया था वो हमारे इंटेंशन के बियॉन्ड था, क्योंकि हमारा लॉ तो हमेशा से उनको प्रॉपर ऑफिसर मान के चल रहा था. नाउ वी आर करेक्टिंग दैट डिफेक्ट और लैक्यूना. गीला है सब. तो यहाँ पे जो वैलिडेटिंग स्टैट्यूट है, देखिए डिफरेंस है. व्हेन अ क्लियर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इज मेड, तो वहां पे तो लॉ वो बोलते हैं कि हम एक नई लाइबिलिटी इंसर्ट कर रहे हैं विच इज फ्रॉम अ रेट्रोस्पेक्टिव डेट. पर जब वैलिडेटिंग स्टैट्यूट आता है तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो लॉ में ड्राफ्ट किया हुआ था पहले से ही और हम उसको कोई नई चीज को नहीं ला रहे हैं. वी आर ओनली करेक्टिंग द एनोमली व्हिच वाज देयर इन द लॉ. और जब आप फाइनेंस बिल 2022 देखेंगे तो जो उसका हेड नोट है जहां पे इसको सही किया गया है, टू nullify the judgment of honorable apex court, it is saying that a validating provision, it is specifically referring as a validating provision. Now this was the clause 96 of finance bill 2022 wherein they said validation of certain actions taken under customs act. Or in clause 96 of finance bill 2022, for the purpose of this section 2, 3 and 5 of the customs act as amended by this act shall have and shall
always be deemed to have effect for all purposes, as if the provisions of the Customs Act as amended by this Act had been enforced at all material times. इसके बाद आता है डिक्लेरेटरी एक्ट. Declaratory Act, when we see a declaratory act, it always declares to remove existing doubts. Or in case of decision of Central Bank India versus the workmen, in that case, Honorable Apex Court said that usually, if not invariably, such an act contains a preamble and also the word declared as well as the word enacted. So for modern purposes, a declaratory act may be defined as an act to remove doubts existing as to the common law or meaning or effect of any statute. तो अगर हम क्लॉज 83 ऑफ फाइनेंस बिल 2021 देखें, ये इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड था. इफ आई रिमेंबर करेक्टली, सेक्शन 282B. It says, for the removal of doubts, it is hereby declared that nothing contained in this section shall apply to any proceedings initiated before the date on which the Finance Bill 2021 receives the assent of the President. So in this case, they have specifically said that for the removal of doubts, it is hereby declared. And along with that, in case of Keshavlal Jethalal Shah versus Mohanlal Bhagwan Das, Honorable Apex Court explained the scope of explanatory act, wherein it says that an explanatory act is generally passed to supply an obvious omission or to clear up doubts as to the meaning of the previous act. So section 29 subsection 2, before it was enacted, was precise in its implication as well as expression. The meaning of the word used was not in doubt and there was no omission in the phraseology which was required to be supplied by the amendment. So the amendment made in section 29(2), which was in question before the Honorable Apex Court, they only said that it was an explanatory amendment because prior to that amendment also the law was pretty much clear on that aspect. तो अगर हम सेक्शन 17(5) जो CGST एक्ट की बात करते हैं, और वहां पे क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 17(5) में जो 1 फरवरी 2019 को जो अमेंडमेंट हुआ था, और वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर मोटर व्हीकल विल नॉट बी अलाउड. तो क्या वो एक प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट था या फिर वो एक एक्सप्लेनेटरी अमेंडमेंट था, क्योंकि उसके पहले की भी लैंग्वेज वाज सफिशिएंट इनफ टू कवर डिनायल ऑफ आईटीसी ऑन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, because section 17(5)(a) at that time prior to 1st of February 2019 contained the words in respect of. So it is not always that amendment which has been made is treated to be a prospective amendment if the courts are able to distinguish that yes, the language prior to this amendment was also sufficient enough to deny or to explain a provision, and the future amendment is only made to clarify the doubts. So in that case, it would be treated as an explanatory amendment. Now, there is another type of amendment which is called as impact of clarificatory or curative legislation. Now, in this case of Santam Textile Private Limited versus Union of India, Bombay High Court, 14 November 2022, wherein notification number 79/2017, customs dated 13th October 2017, was to be read as clarificatory or curative in nature, in as much as it would otherwise leave a whole class of importers who had imported capital goods uncovered during the period 1st of July 17 to 13th of October 2017. So this notification, which I guess was for Rule 96, wherein capital goods were imported and the benefit of IGST refund under IGST scheme was sought to be denied. This notification was held to be clarificative or curative in nature. Now, in this case of a Birla Cement Works versus CBDT, 28 February 2021, very important principle was laid down, wherein it said one of the two possible interpretations of a taxing statute which favors the assessee and which has been acted upon and accepted by the revenue for a long period should not be disturbed except for compelling reasons.
How we can relate this decision to GST? The clarification on the royalty aspect, wherein the circular says that the intention of the lawmakers was to tax the royalty from 1st of July 2017. Now, there might have been case that there were two interpretations. The levy of tax rate similar to what was applicable on the goods was one which favored the assessee, but which was equally acted upon both by the department by way of double R and triple R decisions and by the assessees and by the officers of the department as well. So once it has been acted upon by all the concerned persons, it should not be disturbed except for compelling reasons. And the question is whether that circular cites the compelling reasons to disturb the practice which was prevalent for taxation of royalty up to 31st of October 2000, 31st of December 2018. So in this case, Honorable Court said that one of the two possible interpretations of a taxing statute which favors the assessing which has been acted upon and accepted by the revenue for a long period should not be disturbed except for compelling reasons. There can be no doubt that if the only view of section 194C had been the one reflected in the impugned circular, then the issue of earlier circulars and acceptance and acting thereupon by the revenue reflecting the contrary view would have been no consequences. That, however, is not the position. Further, there are no compelling reasons to hold that explanation 3 inserted in section 194C with effect from 1st of July 1995 is clarificatory or retrospective in operation. We hold section 194C before insertion of section 3 is not applicable to transport contract, that is contract for carriage of goods. तो यहाँ पे उन्होंने सर्कुलर और जो उसका एक्सप्लेनेशन है उसको बोला कि भाई ये जो आप चीज समझा रहे हो that was not in the statute earlier, and there was a view which was followed by the revenue as well as the assessee. Now that cannot be disturbed by way of insertion of an explanation. Whether every retrospective law which takes away an existing right or creates a new obligation or imposes a new liability is violative of fundamental right. तो यहाँ पे Arvind ji, I was interrupting. Last 5 minutes है आपके. yes, only last 5 minutes. Okay. देखिए ये जो डिसीजन था स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर वर्सेस रमन लाल केशव, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसको रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट को समझाया. Law cannot be made to destroy today's accrued constitutional rights by artificially reverting to a situation which existed 17 years ago. लॉ मेकर्स ये नहीं बोल सकते कि दो पार्टियां जिनको 20 साल पहले राइट्स थे, हम आज की तारीख में वापस से उनको 20 साल पहले ले जाना चाहते हैं. You cannot artificially revert back to a situation by way of a retrospective amendment which was prevalent there about 17 years ago. Again, an observation, the law cannot say 20 years ago the parties had no rights. Therefore, the requirements of the constitution will be satisfied if the law is dated back by 20 years. A legislature cannot legislate today with reference to a situation that obtained 20 years ago and ignore the march of events and the constitutional rights accrued in the course of 20 years. Today's equal cannot be made unequal by saying that they were unequal 20 years ago, and we will restore that position by making a law and making it retrospective. So the persons who are equals today cannot be said to be made unequal because they were unequal 20 years ago. So these are some of the decisions wherein they have laid down the basic criteria that when a retrospective amendment would be invalid, and in case they have said that if the law is not following up with the conditions laid down in Article 14, 19 and 21 or Article 13 of the Constitution, it would be held to be an invalid law as per within the four corners of the Constitution of India.
Now, concluding the today's session and discussing with vis-a-vis the GST aspect. See, whatever provision that we have discussed, Section 71AA. In case of Section 71AA, we know that it has been brought to negate the decision of Honorable Apex Court. But in my opinion, it creates a new liability. It does not explain the existing provision. So in that case, there is a ground that it will be challenged. It could have been challenged by now on the aspect of being violative of Constitution of India. The second aspect is the circular which has been issued on the notification which has been issued for 5th of July 2022, wherein the formula to claim refund has been amended. And that formula to claim refund has been amended in Rule 89.5. Now, if we go by what we have discussed, it is a formula which has been inserted due to the judgment of Honorable Apex Court. तो एक साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट तो ये बोलता है कि सर सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको बोला कि आपको फॉर्मूला सही करना है तो आपने एक एनोमली करेक्ट करी है जो लॉ में 1 जुलाई 17 से थी, और जब वो लॉ में 1 जुलाई 17 से थी तो आपने जो करेक्शन किया है इट शुड हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और अगर मेरा राइट है तो आई शुड बी अलाउड टू फाइल द क्लेम ऑफ रिफंड। दूसरा एस्पेक्ट ये बोलता है कि हमने एक प्रोसीजर में अमेंडमेंट किया है, पहले वाला जो फॉर्मूला था वो भी सब्सटेंटिव राइट जो था सेक्शन 54 में उसके अकॉर्डिंग करेक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन नहीं किया था, उसको ये नहीं बोला था कि भाई आपका फॉर्मूला बिल्कुल ही गलत है, इलीगल है, बियॉन्ड द लॉ है। तो जो फॉर्मूला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना था और हमको बोला था रिकंसिडर करने के लिए, और हमने अब रिकंसिडर भी किया है। तो हमने आपका जो पहले वाला राइट था उसको बढ़ाया ही है, हमने कम नहीं किया है। और जब हमने पहले वाले राइट को बढ़ाया है और पुराने वाले को कम नहीं किया है तो एक प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, और क्योंकि ये प्रोसीजरल अमेंडमेंट है तो आज के बाद से जो भी रिफंड एप्लीकेशन लगेंगी चाहे वो किसी भी पीरियड की लगे वो नए फॉर्मूले से लगेंगी, पर जो पहले लग गई वो पुराना जो प्रोसीजर था उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी, बिकॉज we are not correcting a law which has been declared as invalid. We are only reconsidering, और reconsideration तो कभी भी हो सकता है, हमने आज किया, हो सकता है 2 साल बाद हम वापस से फॉर्मूला चेंज कर दें और थोड़ा सा रिफंड बढ़ा दें विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ सेक्शन 54। तो अब उस समय आप ये थोड़ी बोलोगे कि जुलाई 17 से मेरे को वापस से सारे रिफंड दीजिए। So in that there are two opinions, and what has been clarified by the circular in my opinion to an extent holds correct। पर उसके साथ एक और अमेंडमेंट आया था जहां पे उन्होंने नेगेटिव लिस्ट में जो गुड्स थे रिफंड के लिए उसको एनलार्ज किया था, और जब एनलार्ज किया था तो सर्कुलर में ये भी बोला गया कि अब इन गुड्स से रिलेटेड जो भी रिफंड एप्लीकेशन लगेगी वो हम रिफंड नहीं देंगे क्योंकि अब हमने इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। In my opinion, this provision, this notification which restricts the claim of refund, even for the prior transactions, as the application is being filed afterwards, this is a retrospective amendment, and this has been challenged, and recently only it has been reported by Taxman, and it was shared by me yesterday also. It has been challenged before, if I am correct, it has been challenged before either Delhi High Court or Gujarat. It has been challenged before Gujarat High Court. बिकॉज अगर मान लीजिए मैंने अप्रैल 2022 में कोई आउटवर्ड सप्लाई करी, सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग द इनवर्ड सप्लाईज वर हायर देन द आउटवर्ड सप्लाईज, तो मेरा राइट वहां पे एक्रू हो गया। अब आप जुलाई 2022 में कोई नोटिफिकेशन में अमेंड करते हैं और वहां पे जाके बोलते हैं कि नहीं 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 अब आप इन गुड्स पे आप रिफंड नहीं ले सकते, तो क्योंकि मैंने सिर्फ एप्लीकेशन लेट करी तो मेरे को आप मेरा राइट जो है वो डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज माय सब्सटेंटिव राइट टू क्लेम रिफंड which has been provided in section 54 has accrued to me and it cannot be taken away by a procedural amendment। Again,
सेक्शन 171(3)(a) हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ऑफेंसेस जो 1 जनवरी 20 के बाद के होंगे सिर्फ उन्हीं पे ही वो पेनल्टी एप्लीकेबल होगी, पहले वाले ऑफेंसेस पे नहीं होगी। क्योंकि पहली बात, ना तो वो अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव है, दूसरी बात अगर होता भी तो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायस होगा। लास्टली, फॉर दैट सर्कुलर फॉर टैक्सेशन ऑन रॉयल्टीज, again it is disturbing a practice which was commonly followed by all the stakeholders in the system, and it does not clear an existing thing which was there, because वो बोलता है कि हम क्लासिफाई तो 9973 में करेंगे, पर क्योंकि हमने रेट नहीं दी इसलिए आप 9997 में चले जाइए। दैट इज अगेन वायलेटिव ऑफ द practice which has been commonly followed, and circular cannot disturb that practice, and that is also the practice which was followed was also coming from the scheme of the statute also. 162AA प्रोस्पेक्टिव है, और इसीलिए हमने देखा कि 31 दिसंबर 21 तक गवर्नमेंट इटसेल्फ इज एडमिटेड कि भाई आपको 1 से नहीं लेना है। 162AA जो इम्पैक्ट होगा वो 1 जनवरी 22 से होगा, उसके पहले वाले प्रोविजन पे होगा। तो हम एक सर्कुलर लेके आएंगे। वो सर्कुलर कहां तक वैलिड है, दैट इज समथिंग टू बी डिस्कस्ड सेपरेटली इन अदर सेशन। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड and hope that this stopgap arrangement was a good one, and going forward in the next week we will again shift to the analysis of the sections in GST. Handing over section back to Arup ji. Yeah, thank you, Arpit ji. Thank you. I think prospective, retrospective, and retroactive. I think this is the distinction that I think was something new, and I think everybody has added value to this. And today, I think we have a few, one or two questions. So one question is from Vivek Lada ji, that I think the formula of 89(5) is not procedural in law. So you'd like to answer that, Arpit ji? क्या है? The rule 89(5), as far as the refund is concerned, is not a procedural law. That is नो, देखिए आप वही चीज बोलिए ना कि अगर हम ये बोलते हैं कि रूल 89(5) में जो अमेंडमेंट है अगर वो प्रोसीजरल नहीं है, तो अगर सब्सटेंटिव बोलेंगे तो वो तो वैसे ही प्रोस्पेक्टिव है एप्लीकेशन में। भाई अगर आप उसको बोलते हैं कि वो एक सब्सटेंटिव अमेंडमेंट है तो वो तो वैसे ही प्रोस्पेक्टिव है। हमको अगर उसको कंटेन करना है कि रेट्रोस्पेक्टिव है, तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि इट इज सीकिंग टू करेक्ट एन एनोमली इन द लॉ व्हिच वाज प्रेवलेंट in the law, and if it would not have been corrected, it would have traveled beyond the provisions of section 54. तब तो जाकर के मैं इसको रेट्रोस्पेक्टिव बोल सकता हूँ, नहीं तो ये तो प्रोस्पेक्टिव होगा, क्योंकि तो आप खुद ही बोल रहे हो कि प्रोसीजर है तो प्रोस्पेक्टिव होगा हमेशा। और वो बोल रहे हैं ना कि आपने इसके बाद में जो भी रिफंड एप्लीकेशन लगाई, हम आपको पुराने नए फॉर्मूले से उस पर अलाउ करेंगे। अर्पित जी, क्वेश्चन एक्चुअली मेरा इस पर्सपेक्टिव से नहीं है, इसको लीगलिटी से हमको समझना है कि एग्जैक्टली प्रोसीजरल किसको कहा जाएगा और सब्सटेंटिव किसको कहा जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो ऑफ कोर्स सेकंड पॉइंट होना चाहिए। पहले हमको अदर साइड ऑफ द टेबल भी समझना पड़ेगा कि किस बेसिस पे अकॉर्डिंग टू यू वेदर इट इज अ प्रोसीजरल अमेंडमेंट और सब्सटेंटिव अमेंडमेंट। मुझे ये और लगता है कि ये दूसरी बात अगर ये सब्सटेंटिव अमेंडमेंट भी मानता हूं, so it is increasing a right, it is not decreasing a right। मेरे को अगर पहले 100 रुपए का एंटाइटलमेंट था तो मेरे को 150 रुपए का है, तो अगर मैं इसको रेट्रोस्पेक्टिव मानूंगा तो क्यों मानूंगा? इट इज ओनली एनहांसिंग अ राइट एंड व्हिच शुड ऑलवेज बी having a prospective impact, it is not curtailing my right, so how can I challenge that it has to be retrospective? नहीं अर्पित सर, मेरा इसमें पॉइंट क्या है ना, मैं मतलब मेरा क्यूरियोसिटी क्या है इसमें कि नो व्हाट आर द क्राइटेरियाज बेस्ड ऑन व्हिच वी कैन से इट इज अ प्रोसीजरल वन और सब्सटेंटिव वन। ठीक है, तो मेरा जो क्यूरियोसिटी इसको जानने का जो शुरू से इस सेशन में मेरा जो चल रहा है वो यही चल रहा है पर्सपेक्टिव कि हाउ, मतलब मेरा एक कोई डिमार्केशन तो होना चाहिए ना जिससे मैं ये कह सकूं कि ये सब्सटेंटिव है या प्रोसीजर है। तो एक बार के लिए रूल सेक्शन 54(3) और इसका रूल 89(5) को एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए, मुझे ये समझना है कि एग्जैक्टली प्रोसीजर और सब्सटेंटिव के बीच थिन लाइन डिफरेंस क्या है। देखिए I think विवेक जी, इसमें तो अर्पित जी ने जो बताया, I think that is
डिस्कशन जो उन्होंने किया, जैसे 3B का जो उन्होंने बताया अगस्त का, कि अगर उसमें वो चेंज हो जा रहा है, मतलब तो वे 3B में प्रेजेंटेशन क्या करना है, देन दैट्स अ प्रोसीजरल लॉ, राइट अर्पित जी? यस, और देखिए विवेक जी, क्लेमिंग ऑफ रिफंड इज अ सब्सटैंटिव राइट, Yes. ठीक है, सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग। उसमें जो कंडीशंस दे रखी हैं, वो कंडीशंस जो है दैट इज माय सब्सटैंटिव राइट, हाँ. ठीक है। अब इस सब्सटैंटिव राइट को क्लेम करने के लिए एक प्रोसीजर दिया, हाँ, दैट इज कमिंग फ्रॉम द रूल्स, राइट। दैट इज अ प्रोसीजरल एस्पेक्ट। So another thing अर्पित जी that I am defending is like ITC 02, मेरा एक वो ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हुआ है, बट मैंने गलती से ITC 02 फाइल नहीं किया है। नहीं करके मैंने क्या किया, मैंने 3B में वो क्रेडिट ले लिया है। नाउ वेदर this is a substantive right or a procedural aspect that can be seen, it's purely a procedural issue because ITC 02 I did not file, that was prescribed by the rules, right अर्पित जी? पर उसमें अरूप जी ये चीज होगी कि भाई ITC 02 मेरे को बिजनेस ट्रांसफर होगा, एक सब्सटैंटिव राइट दिया, हाँ, पर उस राइट को क्लेम करने के लिए मेरे को एक प्रोसीजर दिया। राइट। अब उस प्रोसीजर को विद इन टाइम लिमिट मैंने फॉलो नहीं किया। अप्लाई नहीं किया, तो हाँ, मेरा लिमिटेशन एक्सपायर हो गया। हाँ, लिमिटेशन एक्सपायर हो गया तो मेरा राइट जो था अब वो डिपार्टमेंट के पास शिफ्ट हो गया। राइट। तो इसीलिए क्या होता है कि लिमिटेशन के दौरान आपने काम किया पर आपको सिस्टम ने अलाउ नहीं किया, तो हाँ, आप उसमें बोल सकते हो कि आई हैड अ रीजनेबल कॉज फॉर गिविंग मी द राइट। पर अगर आपने उस पीरियड में काम नहीं किया, तो फिर आप अगर किसी को ये बोलते हो कि नहीं नहीं ये तो प्रोसीजर एस्पेक्ट था और आपने इसको फॉलो नहीं किया इसलिए आपको मिलेगा, तो वहां पे राइट। जाके वो इशू जो अभी तक कोर्ट ने ट्रांस 1 को भी जहां पे हाँ, डिस्टिंग्विश हाँ, किया, इसीलिए कोर्ट ने ट्रांस 1 को वापस खोला। और जो डिपार्टमेंट काउंसिल से उन्होंने यही आर्ग्यू किया कि सर अगर इन्होंने 180 डेज में नहीं किया तो लिमिटेशन एक्सपायर हो गया, एंड इफ यू आर स्टिल अलाउइंग देम देन यू आर टेकिंग अवे अ राइट। So the question is whether filing Tran 1 was a procedural aspect or a substantive aspect. तो वहां पे फिर कोर्ट ने उसको अलाउ किया। और अभी जो जीएसटी में जितने भी केसेस आ रहे हैं रिलेटिंग टू फुलफिलमेंट ऑफ टाइमलाइन, तो समवेयर डाउन द लाइन द कोर्ट्स आर लेइंग डाउन कि लिमिटेशन पीरियड में इफ यू आर एक्टेड अपॉन देन we will give you, if you are not acted upon then we will treat that you have not complied with the condition. Yeah, I think and here you have brought that wonderful point about the appeals not being filed within the limitation period. Initially the courts were saying ki, you submit this, deposit this 20% and all, and go for the appeal and all, but now recently it's a trend which has been seen, jo aapne bataya, after the apex court judgment, that agar limitation period khatam ho gaya then they cannot ask to go back to the thing. Yes, लिमिटेशन का जो आप प्रवीण कुमार जी ने क्वेश्चन दिया है कि जो 1 फरवरी 19 को जो टाइमलाइन चेंज हुई तो वो रेट्रोस्पेक्टिव होगी। देखिए प्रवीण जी, इसी चीज में हम चलते हैं, लिमिटेशन पीरियड इज ओनली प्रोसीजर। तो अगर मान लीजिए 1 फरवरी 19 को टाइमलाइन चेंज करके 2 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न कर दिया, तो अब मैं अगर मान लीजिए जुलाई 17 का कोई रिफंड लगाता हूं 1 फरवरी 19 के बाद में, तो वो 2 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से ही कैलकुलेट होगा। जो पुरानी टाइम लिमिट थी 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो नहीं लगेगी। हाँ, अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए इस एक्ट को 1 फरवरी 19 को अप्लाई किया और कोई पीरियड का टाइम पीरियड जो इन्होंने रिवाइज टाइम लिमिट दी है उस कारण से एक्सपायर हो जाता, तो मेरे को ऑन अकाउंट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी मेरे को एक्सटेंशन मिल जाता। पर क्योंकि 1 जुलाई 19 की ड्यू डेट थी 20 अगस्त 19, 2 साल का टाइम पीरियड था 20 अगस्त 21, विच वाज 1 जुलाई 17 का जो ड्यू डेट था वो 20 अगस्त 17 था, और 2 साल का जो टाइम पीरियड था वो 20 अगस्त 19 था, which therefore the applicant has sufficient time to apply for the refund for July 17 even after the revised time limits। तो उसमें इसीलिए ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि 1 फरवरी 19 के बाद अगर पुराने पीरियड के कोई भी रिफंड लग रहे हैं तो वो नई टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही लगेंगे, पुरानी टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं लगेंगे। And the last question we'll take of Annapurna ma'am, which is whether explanations will apply retrospectively, which are clarificatory in nature, and if explanations expanded the scope, then whether it will apply prospectively. मैम वो शायद सेक्शन 194C का जो हमारा डिस्कशन था, जो मैंने बिरला वर्क्स वाला लिया था, वो इसी पॉइंट को कवर कर रहा था कि जो एक्सप्लेनेशन और सर्कुलर आया, इट वाज नॉट एक्सप्लेनिंग अ प्री एग्जिस्टिंग प्रोविजन,
it was seeking to insert a new provision through an insertion of application explanation. Therefore, they were considered as a prospective. They were not considered as retrospective. Although the thumb rule says that whenever the explanation is inserted, it is always retrospective. Retrospective, yes, sir. So I think this principle we can borrow now, sir. Like if it is a Yes. curative in nature, then it is retrospective. But if it is Yes. expanding the scope of section, then I think we can look prospective. Okay, okay. Thank you, Yes. sir. तो अर्पित सर, ये हाँ. जो 17.3 में जो एक्सप्लेनेशन में जो अमेंडमेंट लेकर आए थे, है ना, 1 February 2019, और फिर बाद में वो एक और अमेंडमेंट लेकर आए थे 1 October 2023 से, है ना? तो इन अमेंडमेंट, ये एक्सप्लेनेशन पे आप क्या कहेंगे? 17(3) में जो अमेंडमेंट लाए थे, एक सेकंड में, अपना जो एक्सप्लेनेशन, जो क्रेडिट रिवर्सल, कॉमन क्रेडिट रिवर्सल के लिए वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई के को इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन में इंसर्ट किया है, For the purpose of this subsection, the expression value of exempt supply shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule 3 except those specified in paragraph 5 of the schedule. हाँ, तो विवेक जी, आपका क्वेश्चन? नहीं विवेक जी, ये जो एक्सप्लेनेशन आपने हाँ, ये आपने शेयर कर दिया थे। तो एक्सप्लेनेशन जो शेयर किया, अगर हम पहले वाला देखें तो जो 17(3) था, इट वाज सेइंग शैल इंक्लूड सप्लाईज ऑन व्हिच रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग। तो हम देखेंगे तो सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग जो थी, दैट वाज ऑलरेडी क्रिएटेड, ऑलरेडी देयर। So this explanation, what it said, that value of exempt supply shall not include the value of activities transactions specified in schedule 3 except those specified in paragraph. तो ये तो पहले वाली चीज को ही एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि डाउट क्या था कि पैराग्राफ 5 के अलावा जो भी एक्टिविटीज है, क्या उनको भी वाइड, क्योंकि वो सप्लाई तो है नहीं, अब सप्लाई नहीं है तो क्या उनको भी वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। तो इट इज अ एक्सप्लेनेशन व्हिच इज ओनली क्लैरिफाइंग कि भाई क्योंकि हमने स्पेसिफिकली पैराग्राफ 5 को ही शामिल किया है, तो पुरानी दूसरी जो चीजें होंगी वो इसमें शामिल नहीं होंगी। तो इन माय ओपिनियन इट इज अ रेट्रोस्पेक्टिव क्लैरिफिकेशन। इसमें क्या है ना अर्पित जी, मैंने एक क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि ये जो आप अभी स्लाइड दिखा रहे हैं ना, इसमें 1 October 2023 से जो अभी फाइनेंस एक्ट 2023 से जो इफेक्ट में आया है, जो हमारा शेड्यूल 3 का भी पैरा 8 है ना, वो भी इसके अंदर प्रिक्लूड किया है इन्होंने, ठीक है। 8B को नहीं किया है, 8A को किया है ना। तो मतलब मैं जस्ट ये जो अभी अन्नपूर्णा मैम ने ये क्वेश्चन किया है कि एक्सप्लेनेशन को हम थंब रूल, मतलब क्या हम वास्तव में थंब रूल एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज अ क्लैरिफिकेटरी और उसको हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव लिया जाएगा? मतलब मुझे थोड़ा सा इस पे कंसर्न है। नहीं, मैंने उसमें अपने बात भी क्या करी कि एक्सप्लेनेशंस बाय थंब रूल आर रेट्रोस्पेक्टिव, बट इन केस दे आर सीकिंग टू मेक अ न्यू लायबिलिटी और दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग अ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन, तो वहां पे वो प्रोस्पेक्टिव माने जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो शेड्यूल 3 में जो अमेंडमेंट है, उन्होंने उसको करा रेट्रोस्पेक्टिव है। शेड्यूल 3 में भी जो अभी अमेंडमेंट आया है, दैट इज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 July 2017 with effect from 1 October 2023. Great. Because there are a lot of notices that are being issued for that, for the past period, from before the amendment was in place. इसलिए इसको करना पड़ा। So I think with this, I would like to thank all the participants for joining in today, and special thanks to Arpit Haldia ji for taking up the session at such a short interval. Actually, we are supposed to have a senior advocate who are supposed to deliberate on electronic evidences and its correlation or impact under the GST law. He handles a lot of criminal matters there. So unfortunately, due to the opening of the courts today, he has a few matters in the court, so he could not attend. So that's why our knight in shining armor, Arpit ji, was requested to share a session. And I think the session that is picked up has really helped all of us
to gather a lot of insights into this particular topic, which is not much discussed about the amendments, retrospective, prospective, retroactive. So, and the kind of what should I say? The kind of case laws that Arpit has shared, the examples that he has shared, I think that will etch a long-term memory for all of us and will help in the litigations that we are going to handle in the days to come. So with this, I once again really thank Arpit Haldia ji for the session today. I thank each one of you for attending today's session. It's only because you are attending the sessions that we are able to encourage the speakers to, take up and put a lot of hard work into preparing the presentations so that they come here and share their knowledge and also, help us in brainstorming our thing also, because I was sent personal messages from many learned members of our group that the last session of Annapurna ji, that was really helpful to many of them. And so that's why they are requesting for more such sessions in the days to come. So thank you very much and have a wonderful weekend ahead. Arpit ji, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरुण जी एक चीज और बोलना चाहेंगे, जैसे अब तो कम पार्टिसिपेंट रह गए, पर of the 17 participants who are still there, we would say that we would be making an emergency call at any point on Fridays if need be, whenever our pre-existing commitment is not fulfilled by the speaker. So be ready for the emergency call from us. So I'll give one of my experiences. I was in EIRC once here, and I had gone to attend a session, and suddenly the chairman, the EIRC comes and tells that Arup, आपको एक session अभी लेना पड़ेगा. So things can happen like that. And I had actually taken that session that was on show cause notices under service tax. So things like that happen. So what Arpit has suggested, I think it's a wonderful idea. Each one of us can keep one standby presentation ready. Whatever we like in an innovative and a different way, not the general thing that we are doing maybe. It can be on anything that we want to do, like intricacies of filing appeal, how to draft a reply, whatever it can be according to you. And you can keep that ready. So whenever there is an emergency, there's a speaker who cannot turn out at the last moment. We can put in the group and maybe you can volunteer to the speaker. And the intent is that we will continue with the Saturday session every time. Yes, that is it. We will continue. Thank you very much once again and have a wonderful weekend ahead. सर अरुप दा ये पीपीटी मिलेगा ना? हाँ मिलेगा सर, मिलेगा. ये बहुत बड़ा मेरा होगा सर. ये एक पीपीटी में इतना कुछ है जो लाइफ टाइम काम आ सकता है. वो तो अर्पित जी का पीपीटी का सिग्निफिकेंस तो यही है ना. अर्पित जी इतना पढ़ाई करते हैं कि हम लोगों का पढ़ाई का टाइम घटा देते हैं. अर्पित जी को सुनने के बाद ना सर, अभी जैसे वो हर बार तैयारी करते हैं ना, हम लोग भी अभी हर रिप्लाई के अंदर भी बेसिकली सी के भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ मिल सकता है क्या, तो 2-4 लाइन हम वहाँ डाल ही देते हैं, तो हमेशा हेल्पफुल होती है डेफिनेटली. वो है. यस, प्रेजेंटेशन हम अभी शेयर. राइट सर, थैंक यू सो मच. Thank you everyone. Thank you.